जो केरला बेस्ड है उनके शुक्रगुजार है ये इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये फैसिलिटी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक ओपन हो जाएगी, इनॉग्रेट कर देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम लोग इनिशियली 4 मशीन से डायलिसिस मशीन से चालू कर रहे हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी टोटल 9 मशीन के लिए बनाई गई है। इंशाल्लाह जब पेशेंट्स बढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह मशीनें भी हम लोग बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटी एक लो कॉस्ट पे करेंगे जो ब्रेक इवन की तरह रहेगी, जिसमें हम लोग अपनी कॉस्ट कवर हो सके तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्रगुजार है। वो हिसाब से हम काम करेंगे इंशाल्लाह कि पब्लिक को सहूलत हो जाए। और हमारे पब्लिक जो मुंडेश्वर अने हुन्नावर, कुंदापुर, उडुपी वगैरह, मैंगलोर जो भटकल से जा रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी वहाँ पे जा रही है, वो लोग इंशाल्लाह एक अच्छी सहूलत फैसिलिटी पर आके इंशाल्लाह काम करें। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे डायलिसिस टेक्नीशियन को यहाँ पे ले ले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आध टेक्नीशियन को जो शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं वो तकरीबन 10-12 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं। इंशाल्लाह सर्विस अच्छी देने का इरादा है। इंशाल्लाह आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा ताउन कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस न्यूज़ को स्प्रेड करके विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम जितना एनरोलमेंट हो सके वो कर दीजिए, क्योंकि लेट होने पर हम लोग भी इसमें कुछ कर नहीं सकते। जो एक बार एनरोलमेंट होता है वही आदमी आ जाता है, उसके बाद कैपेसिटी फुल होने के बाद हम लोग कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपने रीजन के जो लोग हैं आसपास के, वो इस फैसिलिटी की भरपूर फ़ायदा उठाए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप रजिस्ट्रेशन 901-933-0977 पर कर सकते हैं। हाँ, ये वेलफेयर हॉस्पिटल का रिसेप्शन नंबर है, वहाँ पे आप एनरोलमेंट फॉर डायलिसिस सेंटर बोलेंगे तो वो लोग अपना नाम लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो जिनको इस फैसिलिटी की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह तुरंत अपना नाम दर्ज कर दीजिए, ताकि हम लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से इसको चला सकते हैं। ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಥನಲ್ ಒಂದು NGO ಇದೆ, ಅದರ ಇವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈಗ 4 ಮಷೀನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 9 ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು 4 ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಬನ್ನಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಭಟ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಅದು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು HIV ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, because we don't want to take the risk in the beginning. Gathering is to announce the establishment of a dialysis center which we are opening in the complex of welfare hospital. So first of all, let me thank you all for being present here on such a short notice. Thank you once again. So let me read the press release, official press release. INF Dialysis Center at Welfare Hospital Complex, Bhatkal. Indian Navayat Forum, INF, an NGO which is an organization comprising of
comprising of 8 Bhatkali organizations across India, has been putting a modest effort to serve the people in and around Bhatkal since its inception in 2018. INF's focus since then has been for supporting employment, especially in blue-collar category, upliftment of education, supporting the families of the underprivileged, contributing towards healthcare and medical care of the needy, along with many other welfare activities. During this recent pandemic, INF took an active leadership role towards helping the people in and around Bhatkal by supplying medical aid, sourcing and supplying ration in Bhatkal, establishing a primary COVID care facility at Bhatkal with the support from Majlis-e-Islah wa Tanzim and Bhatkal Muslim Khalij Council, which is known as Rabita. In this direction, we are glad to announce the establishment of our dialysis center, entirely managed and executed by INF. Extends its heartfelt gratitude towards Welfare Hospital Bhatkal and Tunnel, an NGO facility, or going to Kundapur, Udupi, Manipal, and even Mangalore for undergoing this dialysis. The availability of this facility will be a good support for large number of patients undergoing dialysis in and around Bhatkal, reducing the burden of long distance travel along with getting a comfortable treatment as well. This center will have a team of experienced dialysis technicians and support of consultant nephrologists, which will be monitoring the patients once or twice based on the patient's needs. We are in the process of appointing a nephrologist for these patients, which will be done shortly, inshallah. All of this will be charged on a no profit basis, just to meet the basic cost and expenses. We request the press fraternity to support us in this endeavor to spread the word of opening of this dialysis center facility so that the patients in need of dialysis can benefit from this setup. Finally, we request and appeal the people of Bhatkal as well to support us in managing and running this facility so that we can give the best services at the center. Further and finally, we would like to request the patients who need dialysis to come and register in this facility in Welfare Hospital. So, this is the statement that we wanted to make, so that we would like to announce that this dialysis center, which will be open somewhere around second week of April, the work is almost done. Okay, patients have already started registering already. So we wanted to announce this so that people know, and then they can actually take care of this service. Okay. As per the patients' intake, we will keep on increasing the number of machines. The facility has 9 machines infrastructure. 9 machines set up. To start up, it will be 4.